Hi, my name is Sanjay. Um, Today's date is 16th February 2026. Time is around 1 p.m. Yeah. So, um, I'm making this video because 2 ढाई महीने पहले I discovered a broker. The broker's name is Nubra.io and उसमें एक फीचर है जो मुझे लगा कि स्प्रेड ट्रेडिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा और मैं उसको यूज़ करने लगा तो मैंने सोचा कि उसके बारे में एक वीडियो बनाएं एंड दैट वाज द इंटेंट. So in this short video, what I'll be covering is a brief overview of what spreads are, how can you do that spread trading in Nubra, and probably a demo of the types of spread orders that we can do at Nubra, right? Uh, so first question, spreads क्या है? Spreads are nothing but option strategies जहाँ पे there is a buy and sell of two, I mean, two option strikes, right, of the same underlying. Typically हमको सबको पता है कि there are credit spreads and debit spreads, and उसके अलावा उसको मार्केट में काफ़ी नाम दिए जाते हैं, बुल कॉल, पियर पोट, कैलेंडर, आयरन फ्लाई. आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को भी स्प्रेड कंसिडर कर सकते हैं एक्सेप्ट कि उसके बाय विंग्स नहीं है बट दे टिपिकली हैव द मिडिल पाथ. देयर इज नो करस्पॉन्डिंग बाय और द सेल लेग, राइट, इफ यू आर डूइंग बाइंग और यू सेलिंग और द स्ट्रैंगल. So now, what is the problem that we all encounter when with most of the brokers is if you want to enter या एग्जिट करना है कोई एक लेट्स से स्प्रेड में, तो उसको यूजुअली हमें लेवल देख के मार्केट ऑर्डर फायर करना पड़ता है, राइट. और जब मार्केट ऑर्डर फायर करते हैं, टिपिकली अगर आपके पास 4 लेग्स हैं तो चारों लेग्स will get executed at the worst possible price. That is how the market is designed, right? Order book, अगर order book के थोड़े आपको आइडिया है तो आपके मार्केट ऑर्डर्स विल ऑलवेज एग्जीक्यूट एट द वर्स्ट पॉसिबल प्राइस. अगर आपके बाय लेग्स हैं दे विल typically get bought at the highest price. Sell legs will get sold at the lowest price possible as per the order book. दूसरा जो प्रॉब्लम है अगर हम एक स्प्रेड कंसिडर करें, लेट्स से आयरन फ्लाई, राइट, विच हैज 4 लेग्स. अब उस चारों लेग में एज अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट there is no provision on traditional and discount brokers, most of the discount brokers, of keeping an SL at a strategy level. ना हम उसमें टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, हमको अपनी प्रोटेक्शन के लिए इंडिविजुअल लेग्स पे एसएल और टारगेट करना पड़ता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे वॉलेटिलिटी में एक लेग हिट हो जाती है और दूसरी लेग रह जाती है, और जब तक हम रियलाइज करते हैं कि वो एक लेग हिट हो गई है, दूसरा लेग का प्राइस आइदर बढ़ चुका होता है, गिर चुका होता है, तो हमारा जो लॉस एक्सपेक्टेशन है उस स्ट्रैटेजी से वो बढ़ जाता है. कुछ एल्गो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं डेफिनेटली, नाम ले सकता हूँ, स्टॉक्सो, एल्गो टेस्ट वगैरह. वो ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं बट दे इनकर अ कॉस्ट. So, but what I found with Nubra is they have a feature within their platform which allows an efficient way of handling spreads, right? Uh, so next is if we have spreads, what are the different scenarios जो हम हैंडल करते हैं या देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे को एक स्प्रेड एक पर्टिकुलर प्राइस में अगर मार्केट चल रही है लेट्स से एट 100 रुपीज, वी वांट टू एंटर द स्प्रेड व्हेन द मार्क व्हेन दैट एंटायर स्प्रेड is at 110 bucks, right? It is also possible that अभी स्प्रेड हमने मार्केट ऑर्डर में एंटर किया बट आई वांट टू प्लेस एन एसएल. 100 रुपीज़ का है, मैं 90 रुपीज़ पे एसएल लगाना चाहता हूँ एंड माई टारगेट इज 120. टिपिकली मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स डोंट हैव दैट प्रोविजन. थर्ड एक सिनारियो हो सकता है कि चलो अभी स्प्रेड चल रहा है 100 रुपये का, मुझे उस स्प्रेड को एंटर करना है व्हेन इट गोज डाउन टू 90 because I expect the price to go down further, or I want to enter at the price let's say at 110. Fourth case हो सकता है and especially time based straddles, right? I would want to enter a straddle or a strangle or a spread
at a particular time, let's say 9:30, 10:30, 11:30, whatever the time. Uh, so all of these scenarios of spread trading, which are possible, I think Nubra has managed to achieve this through something called as a flex order. What I would do now is take you to Nubra's UAT environment. This is actually the uh, what do you call landing page of Nubra, where one we can log in or sign up, right? Uh, I will show you these scenarios on Nubra's UAT environment. I'm, I'm, I want to make it clear that I'm doing all this in the UAT environment because I don't want to risk money by messing up the execution while I'm making this video. So let's take first case, right? We want to enter a spread at a specified price. So a complex spread बनाते हैं, which is an iron fly. Let's see. I make an iron fly. Okay. I enter the port leg. Uh, I also add an option leg. Jeez. And then I add another leg, which is 100 points away. So this is 100 points away. I bought a leg and 100 points away. I'm buying another call leg. So this is an iron fly, which I can trade. So I go I go to this trade button and then I toggle on the flex button. So this entire spread right now, because it's a what do you call, the primary legs are sell legs, right? तो यहाँ पे नेगेटिव है, वी रिसीव द प्रीमियम ऑन दिस लेग, सो 75 के आसपास में ये चल रहा है. एज्यूम करो मुझे 75 पे नहीं एंटर करना, मुझे 80 पे एंटर करना है, तो आई पंच इन -80 and I place the order. So order is accepted and I can see this in my order, open orders, right? This will not obviously get executed because market abhi 75 के आसपास पे चल रही है for this entire bid and ask. Now let me, because this is an UAT environment, let me try and execute this. If I execute this at 75 point, let's say 75.6, because this will go through, I am just modifying this and executing it. Oh, just a sec, 75 point. Yeah, this order has now been filled. So at that exact price, I'll go to the positions page and refresh it. And you can now see the position has been executed. What is the unique advantage is the price at which I specified, ये उसी में fill लेता है चारों legs का, वो individually कभी भी fill नहीं लेता है. So this is a very big advantage compared to all other brokers, right? So let me now, so this was the first case. Now I would want to talk about price में enter करना है, मुझे SL लगाना है, target लगाना है. So let's say I exit all of this so that I again want to specify I'm doing everything on UAT environment, so there is no risk to capital. I go back to my strategy. I put a trade, I put a flex order. Instead of a price, I'm executing at market. Yeah. So, okay. Yeah. So I'm doing an intraday order. The current price of this spread is 75, close to around 75. The middle price would be 75.5. Let me just do uh,
I'll specify a stop loss price. Well, let's say if it is 75.9, 75.5, and my target price is, I want the spread, buy back the spread at, let's say, $70. I'm just, so I place this order. Momentum trigger abhi nahi. I'll explain momentum trigger. Schedule exit time. I want instant execution. Yeah. So now the order has been accepted. So if I go back, I can see it as in my order book. So basically, this order, uh, when when the price hits 75.5, from an hour's perspective, this will get executed. अगर ये spread पूरा 80 रुपए पे चला गया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा एंड टारगेट स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा. अगर ये स्प्रेड यहाँ से 75 से 70 चला गया तो टारगेट हिट होके this all the legs will get bought back. So this is a very good feature which we have, where we can specify the entry price, the stop loss price, and the target price all together. So let us just change the price so that we get a fill on this order. The order is now filled. So we can see this in the positions tab. So yeah, so this entire set of 4 legs, if either 70 prices hit or 80 prices hit, this will all get the सारे orders reverse हो जाएंगे. पूरा पूरा का पूरा iron fly buy back हो जाएगा, reverse iron fly execute हो जाएगा. या obviously this is an intraday order तो 320 को anyway वो exit हो जाएगा. So how do I show this? Yeah, and now you can see it here. It still says exit legs are pending. So अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, exit legs means इसका जो stop loss और target specified है वो अभी भी pending है. So let me change this to stop loss price of, if I, let's see if I get a fill at this price. I'm changing the stop loss price ताकि entry price. Yeah, so stop loss hit हो गया and the order is now closed. So I've covered this case 1, case 2, case 3. अब एक और strategy जो typically हम work करते हैं वो ये है कि let's say this price of a spread is right now at 75.1. It needs to go down below 75 and then I want to enter. So Nubra has a feature called momentum trigger. So what I will do is I don't want to enter if it is within a volatility parameter. तो मैं यहाँ पे entry price. So momentum trigger का क्या है कि जो price अगर execute नहीं हुआ और market reverse direction में जा रहा है तो मैं enter कर सकता हूँ. So let's say I enter something like 100 over here and momentum trigger I enter 70 because I want to enter into this fly if the spread value is at 70. So I can do that. तो इससे ये होगा कि let's say ये 25600 का मैं आपको इंस्टा ऑप्शंस में समझाने की कोशिश करता हूँ. 600, yeah, and I want to do iron fly. Okay, that is 600. ये जो अभी हमने फ्लाई देखी थी उसका प्राइस ये चल रहा है और इसका चार्ट है. मैं चाहता हूँ एंड बिकॉज दिस एन प्राइमरली एन आयरन फ्लाई, ये मेरी स्ट्रैटेजी है एंड स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है कि 70 के नीचे मुझे एंटर करना है. 70 is the price at which I want to enter this leg, right? It can be any price. बट अगर वो ऊपर गया तो मुझे आई वॉन्ट टू लीव रूम. सो मैं क्या करता हूँ, मैं डे हाई के ऊपर या डे हाई के द हाईएस्ट स्विंग लो विच आई कैन फाइंड मैंने 90 लगा दिया है. तो
If from this point onwards price falls to 70, the order will get executed, or if the price goes up to 90, the order will get executed. Which, because my preference is while the price is falling down, I want an execution. मैंने ये price ऊपर रख दिया है, तो मैंने वैसा किया है, and that is how just keep it 90. So this is how this momentum trigger works. Yeah. Now there is another feature which I will show it here itself, is where I can schedule an entry time. Okay. And if it is a market order, it's a limit order, I can schedule an entry time. मुझे चाहिए कि ये 2 बजे के बाद ही एग्जीक्यूट हो, तो मैं इसको स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि ये वाला जो एंटायर ट्रिगर है सिर्फ 2 बजे को एग्जीक्यूट हो, विच इज़ अनदर गुड फीचर टू हैव, स्पेशली जो लोग टाइम बेस्ड स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करते हैं या एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में एसोसिएटेड उनकी स्ट्रैटेजीज हैं कि 10:30 बजे के बाद मुझे एंटर करना है, मुझे 11 बजे के पहले एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो वो सब आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो. सो oh, it's an earlier order, but you get the idea, right? So I've covered all the cases here. So this is something called flex order. Um, what else? So this was the reason for me to make the video. The other thing was what other things I found very good with Nubra is they have an excellent Python library, and there you and I showed you the entire execution on the UAT screen. I did show you on the actual my account, right? So the complete UAT sandbox is almost close to realistic. ये बहुत सारे ब्रोकर्स नहीं दे पाते हैं जहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज टेस्ट कर सकते हो, इवन ऑलमोस्ट क्लोज टू जैसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वैसे यहाँ पे you can punch in orders, right? So these are the two other things which I found very good. Uh, at this point in time, I have no commercial benefit in this video, so I don't have a referral link to share. Uh, you can Google Nubra.io on Google and directly open account on the website. And that's all from my side. Thank you.